about this generalization and specialization concept. Now comes to the utilization relationship. In utilization, class uses the another class is called the utilization relationship. माने एटा गोटे एग्जांपल नहीं परिबा हमें सपोज शॉपिंग जो करूचे फ्लिपकार्ट अमेज़न शॉपिंग कला परे सेठी हमें ऑनलाइन पेमेंट हमें करूचे तो एट द टाइम गोटे होची कैश ऑन डिलीवरी अछि आ गोटे हमें ऑनलाइन पेमेंट करिवा सो आफ्टर परचेजिंग हमें तरा डायरेक्ट सेटा पेमेंट कर दोचे एटे बैंक यूपीआई को से हमको रिडायरेक्ट कर दोचे तो यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप हमें कहा कहबा ना क्लास यूजेस द अनदर क्लास माने एठी जो शॉपिंग साइट ता अछि से हमरा बैंकिंग यूपीआई टा को से यूज कला तो एटा को कहबा हमें यूटिलाइजेशन रिलेशनशिप तो क्लासेस यूजेस द अनदर क्लास माने एठी ड्राइवर होची गोटे क्लास तो ड्राइवर से कहा को यूज करिवो ना बस चले परिवो फोर व्हीलर को भी चले परिवो so this kind of relationship we can say it is a utilization relationship बुझी पाइला ना बुझी लाने utilization शुभलक्ष्मी Yes, sir. Yes, sir. तापर होची instantiation relationship between a class and instance of that class is called as the instantiation relationship. You can say like eta jati gote java class hala so you are the instance of that class or you call as you are the part of the class. The relationship between a class and instance of that class is called as the instantiation relationship. Now based upon this relationship a relationship को नहीं की हमारा inheritance concept असीचे तो inheritance means a subclass माने हमें कहबा child class बा हमें कोन करू ना पेरेंट कर गुण किछि कॉपी करिताओ प्लस हमें निजर किछि गुण रखिताओ तो subclass object get the copy of the data member and member function of the superclass. Subclass inherit all the attribute from another class. Superclass means class from which attributes are derived. Subclass object get the copy of the data member and member function of the superclass. Subclass inherit the attribute from another class. Superclass means from which attributes are derived. माने जीए सबो इन्फॉर्मेशन को शेयरिंग करे ताकू कहिबा हमें सुपर क्लास बोली कहिबा जीए इन्फॉर्मेशन टाको कॉपी करे ताकू हमें सब क्लास कहिबा से इन्फॉर्मेशन को कॉपी करिवो प्लस ए निजर किछि फंक्शनलिटी दबो तो एटा को हमें कहिबा ए जे वर्ड सब क्लास बोली कहिबा सब क्लास इज यू कैन से इट इज ए specialized form of the superclass. It is a specialization of class. Superclass is called the generalized class, which is sharing the functionality. That is generalized class. It is specialized class. So there are three different type of inheritance we have. One is single inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance. Okay, so just wait मु whiteboard को जाऊची तेरे बुझेबी गोटे मिनट वेट करो
Yes, sir. Yes, sir. हमर जो इनहेरिटेंस अच्छी से इनहेरिटेंस टा होची थ्री टाइप रो इनहेरिटेंस हमें यूज करियो. So there are three type of inheritance we have. One is single inheritance. Inheritance कौन हुए ना सब बेले चाइल्ड क्लास जो अच्छी चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास रो इनफॉरमेशन टा को कॉपी करियो. तो हमें जदी इनहेरिटेंस से जदी गोटा को पेरेंट कहिवा आ दोनों को चाइल्ड कहिवा एटा जे टेक्निकल टर्म जदी हमें पेरेंट कहिवा ताको चाइल्ड कहिवा जण को जदी हमें सुपर कहिवा आउटा को सब क्लास कहिवा जदी हमें ताको बेस क्लास कहिवा आको हमें कहिवा डिराइव क्लास. तो पेरेंट आउ चाइल्ड सुपर एंड सब बेस एंड डिराइव क्लास. तो ये तीनटा डिफाइन करिए पेरेंट एंड चाइल्ड सुपर एंड सब बेस एंड डिराइव क्लास. ओके एटा लिखिनियो इन इनहेरिटेंस रेटा हमें डिफाइन करिवा. तो ये जो इनहेरिटेंस अच्छी ये इनहेरिटेंस टा होची हम थ्री टाइप. Types of inheritance. One is single inheritance. Multiple inheritance. The next is multi-level inheritance. तो inheritance होची तीन प्रकार. तो inheritance define what inheritance tell? It define extends the functionality of existing class by adding new functionality on it. हमें गोटे क्लास रा फंक्शनलिटी टाको एक्सटेंड्स करिवा बा बढ़ेवा केमती तादर किछि नुआ फंक्शनलिटी ऐड करिवा एटा कहवा हमें इनहेरिटेंस बोली कहवा. आ ए जो इनहेरिटेंस होची एटा होची तीन प्रकार रहइबो. गोटे होची सिंगल इनहेरिटेंस मल्टीपल इनहेरिटेंस आ गोटे हला मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. तो तीन प्रकार इनहेरिटेंस हला single inheritance, multiple inheritance and multi-level inheritance. तो लिखिनियो
लिखिला Yes, sir. Yes. तो फर्स्ट मैं डिस्क्राइब करी अबाउट सिंगल इनहेरिटेंस सिंगल इनहेरिटेंस माने एटा जदि गोटे पेरेंट क्लास रहिला ए पेरेंट क्लास रो गोटे चाइल्ड क्लास आसीबो मींस वन चाइल्ड क्लास derive its set of attribute from one parent class. So in single inheritance, the single inheritance, one child class derives माने ताटो कॉपी करियो derives the set of attributes माने variable and related behavior from one parent class. One child class derive its set of attribute and related behavior from one parent class. That is called the single inheritance. चला Yes, sir. Yes, sir. après आसीबा हमें Yes, sir. multiple inheritance. Now I discuss about multiple inheritance. In multiple inheritance, one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. This is parent 1 and parent 2. So it means one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. So one child class derive its set of attribute and related behavior from more than one parent class. माने गोटे child class दीटा parent class रो information copy करियो. Parent 1 and parent 2 रो information copy करियो. एटा कुआ जे multiple inheritance.
लिखिल Yes, sir. तो important thing is what Java doesn't support the multiple inheritance. Java multiple inheritance support करे नहीं. Okay, तो आमे गोटे चाइल्ड क्लास जतले आमे मल्टीपल पेरेंट क्लास रो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करिवो तो ए क्षेत्र रे जावा कोन करिवो जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करे नै एटा मन रखिवो और लिखि देबो जावा डजंट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस. ओके ओनली इन द केस ऑफ इंटरफेस जावा रे गोटे कांसेप्ट अछि इंटरफेस. इन द केस ऑफ इंटरफेस इट सपोर्ट द मल्टीपल इनहेरिटेंस. तो जावा doesn't support the multiple inheritance, but in the case of interface it support the multiple inheritance. Okay, right? Java doesn't support multiple inheritance. Java doesn't support the multiple inheritance, but in the case of interface it support multiple inheritance. But in the case of interface it support multiple inheritance. तापर हमें पढ़िबा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल रे always a parent class is converted to the derived class. माने parent class रो सबोरे child class आसी जीवो केमती ना सपोज एटा गोटे parent हला parent रो again हमर आसेला कोन child 1 child 2 child रो again हमर आसेलेटा सब child 1 सब child 2 then सब child 3 सब child 4. So always the derived class is derived from the base class. माने तारा एटा कहबा हायरार्चिकल रिलेशनशिप और हेरिडिटिकल रिलेशनशिप हमर जो वंशानुक्रमिक जोटा कहबा बा हमर ग्रैंड पेरेंट रो पेरेंट रो हमें रहउचे तापर नेक्स्ट जनरेशन तो एटा को कुआ जीवो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. So this concept is called as a multi level inheritance. So Java support single inheritance and multi level inheritance, but Java doesn't support multiple inheritance. बुझेला बुझे होची तो ना निद मारुची नहीं ना सर Hey, बुझा गला सर. এটা বেসিক্যালি আমি থ্রি টাইপ অফ ইনহেরিটেন্স মানে উপস কনসেপ্ট ଅଛି ତ ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କହି ପାରିବେ ହାଇବ୍ରିଡ ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଅଛି. ଓକେ ତ ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଉପସ ୱାଇଜ ଆମର ତିନିଟା ଇନହେରିଟାନ୍ସ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଫଲୋ କରିବା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତମେ थ्री टाइप ऑफ इनहेरिटेंस कहले भी चलियो किसी प्रॉब्लम नहीं.
एबे आसीबा आमे इनहेरिटेंस टाको केमिति इंप्लीमेंट करिवा इन जावा रे आमे इनहेरिटेंस केमिति यूज करिवा बा आमे केमिति गोटे क्लास रा फंक्शनलिटी टाको बढ़ेवा सपोज मोर गोटे क्लास अछि क्लास पेरेंट एक क्लास पेरेंट टाको मु माने किछि नुवा फंक्शनलिटी देबी आ गोटे क्लास बनैबी सपोज क्लास चाइल्ड हैला एटे मु यूज करिवि एक्सटेंड्स कीवर्ड द क्लास एक्सटेंड्स कीवर्ड एटा ए कीवर्ड यूज करा जिवो फॉर पासिंग द इनहेरिटेंस तो एक्सटेंड्स इज ए कीवर्ड it is a keyword which is used to pass inheritance. It is a keyword which is used to pass the inheritance. That is called the extends keyword. The extends keyword is used to pass the inheritance in Java. देखिए now next lecture up. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. So in oops concept आमे गोटे concept पढ़िथिले सेटा होची abstraction and encapsulation. Abstraction and encapsulation. Abstraction means showing the relevant information which is required for user. माने जो जिनस गोटे यूजर पे दरकार आमे सेही इंफॉर्मेशन ता शो करियो. Encapsulation means होची hiding the information which is not required. जो इंफॉर्मेशन मते दरकार नाही ताको मु हाइड करिवि. अर्थ होची मु गोटे ड्रेस दुकान को जीबी आ मु मागीबी सपोज मते टी शर्ट दरकार तो से लोक मते केवल टी शर्ट ही देखेबे. दैट डजंट मीन सेठी आउ शर्ट्स नहीं जीन्स नहीं और अलगा फॉर्मल पैंट्स नहीं. तो व्हिच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर मी मु सेही रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ही गोटे यूजर को शो करिवि. तो जो जिनस मु शो करोची ताको कुहा जिबा एब्स्ट्रैक्शन आ जो जिनस गुडा को मु हाइड कर देबी ताको कुहा जिबा एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन इज यूज्ड फॉर हाइडिंग द इंफॉर्मेशन. Abstraction is used to show the relevant information. So in inheritance, abstraction and encapsulation is used by with the help of access specifier. एटा oops concept रे हमें abstraction encapsulation पढ़ी दिए ताको जेते बा programmatically हमें यूज करिवा programmatically ताको यूज करिवा by using of access specifier through रे यूज करिवा. तुम लिखि पार एब्स्ट्रैक्शन हेडिंग दे लिख लिखी मुझे डाकी एब्स्ट्रैक्शन लिखी ना लाउथरे. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोइंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन encapsulation means hiding the information. The encapsulation is just like opposite of your abstraction. Encapsulation means hiding the information. Abstraction means showing the relevant information. This abstraction and encapsulation is implemented programmatically by using of access specifier. तो programmatically हमें जब आपको यूज करिवा encapsulation and
एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन को ताको हमें प्रोग्रामेटिकली यूज करिया बाय यूजिंग ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। अब कुआ जाए एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर माने मु कोठी को जिंसटा को एक्सेस करि परिबी। ओके धर गोटे जिनस रहिला से जिनसटा को मु कोठी एक्सेस करि परिबी। लाइक घरे जो ट्यूबवेल अछि ओनली योर फैमिली मेंबर कैन यूज इट। बाहर जो मंदिर रे जो ट्यूबवेल अछि पब्लिकली दे कैन यूज। बाहर जो पार्क अछि तादरे जो बेंच पड़िछि सो एनीबॉडी कैन यूज। घरे जो बेंच पड़िछि ओनली योर फैमिली मेंबर एंड यू कैन यूज। तो दैट इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी। हमें सेम बेंच किंतु डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन किए ताको यूज करि परिबो तो सेटा को जे एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेस स्पेसिफायर डिफाइन the access specifier it defines the accessibility of members हमें कही परिबा it may be your variable or function। accessibility of member to other class। It defines the accessibility of member to the other class। So this access specifier in Java we're using different access specifier। One is public, private, protected, next is default। ओके तो हमें चारटा एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर परिबा। गोटे होची पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, आ गोटे हला हमें यूज कर परिबा प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। तो चारटा एक्सेस स्पेसिफायर हमें यूज कर परिबा इन जावा। लिखिनियो लेक्चर कहयो चलो सर। ओके एबे आसीबा हमें पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर पाकू। Public access specifier means by defining this access specifier the members are accessed to any class present in same package or folder or directory or
different package. So by defining public access specifier, the members are access to any class present in same package or different package. So that is called the public access specifier. आमे कौन सी वेरिएबल को पब्लिक डिफाइन करि पारे जेंते हमें डिफाइन करि परिबा वेरिएबल को जदि पब्लिक डिफाइन करि परिबा पब्लिक int ए फंक्शन को जदि पब्लिक डिफाइन करि परिबा पब्लिक void show function, it is a public. That means your variable and function is accessed anywhere. Sala? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so next class रे आउ आगो access specifier पढ़ेबी काली टिके घरे पूजा अछि काली नहीं होबनी मो फ्राइडे दिन कनेक्ट करिवि ओके Yes, sir. Okay, sir.